Good morning students, this is part 5 of aldehyde ketones and carboxylic acid. In this video, I'm going to discuss about the chemical reactions of carboxylic acid. So first reaction which I'm going to discuss is the reactions involving cleavage of OH bond. So reactions involving cleavage of OH bond. So whenever there is a breaking of OH bond तो it is like कि वहाँ हमेशा acidity की बात होगी. So OH bond जब भी break होगा तो it will release the H ions, and H ions if it releasing, it means we are talking about the acidity or acidic character. So the carboxylic acids like alcohols evolve hydrogen with electropositive metals and form salts with alkalis similar to phenols. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी अल्कोहल्स की तरह क्या करते हैं, हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं जब ये मेटल से रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, एंड सॉल्ट बनाते हैं विद alkalis similar to phenols. However, unlike phenols, they react with weaker bases such as carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide, and obviously they also react with the weaker bases or the salt of weak bases like carbonates or the hydrogen carbonates, and with by reaction with these weaker bases they evolve the carbon dioxide gas. But phenol does not react with this weaker bases. Fine. This reaction is used to detect the presence of carboxylic group in an organic compound. So we do this reaction in a lab to detect the carboxylic group. So here is the first reaction where acid is reacting with the sodium and giving you sodium carboxylate, which is a salt of carboxylic acid, that is sodium salt of carboxylic acid, and evolving the hydrogen gas. And similarly your acid is reacting with the base, that is NaOH, and giving you again the sodium salt of carboxylic acid and the water. And next your acid is reacting with the weaker base, which is basically a salt. It is a salt of strong base and weak acid, and reacting with, so because it is a salt of weak acid and strong base, that is why this is a basic salt, and again giving you a basically salt, which is the sodium carboxylate, water, and the carbon dioxide. Carboxylic acids dissociate in water to give resonance stabilized carboxylate anions and the hydronium ion. तो अगर ये वाटर में डिसोसिएट होके क्या देते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एनायंस और दी हाइड्रोनियम आयन. सो वी कैन राइट दिस रिएक्शन लाइक दिस, लाइक सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग, let me consider this R only because we are doing this in general. It's fine. This acid is in water is giving you carboxylate anion and the hydronium ion. Fine. And you can write the K equilibrium like this for this reaction: RCO negative, H3O positive divided by water and the acid. Now if you put this water to the K equilibrium side, it will give you Ka, that is the acid dissociation constant, which is equals to this. Now this Ka basically determines how stronger is the acid. Larger the value of Ka, larger will be the dissociation, larger will stronger will be the acid. Fine. So Ka की value अगर बड़ी है तो आपका acid भी क्या है, strong है. Similarly, but we talk about acidity in the terms of pKa values. So just multiply just multiply this Ka by minus log, it will give you pKa, small pKa. तो pKa कैसे बना? If you multiply Ka with minus log and these values will be pKa. On the basis of pKa we discuss the acidic basically the whether the acid is whether the acid is strong, medium, or it is weak. Fine. It basically we discuss on the basis of pKa values. So when your Ka value is large, so in that case your acid is strong. Fine. And when your Ka value is large, then your pKa will be small. So for the stronger acids your pKa values are smaller. Fine. And Ka values are larger. So it is saying the pKa of hydrochloric acid is basically minus 7.0, whereas pKa of trifluoroacetic acid, the strongest carboxylic acid, the benzoic acid, and the acetic acid are given in this range respectively. So you can see the smaller the pKa value, stronger will be the acid. So if I say ki which one will be the stronger acid among HCl, trifluoroacetic acid, benzoic, and the acidic, so it will be HCl because its value is minus 7.0. So it is saying strong acids have pKa value less than 1, that is minus 7 यहाँ हो गया, तो it is a strong acid. The acids with pKa values between 1 and 5 are considered to be moderately strong acids, and weak acids have pKa value between 5 and 15, and extremely weak acids have pKa value greater than 15.
fine. So all three acids, basically these are, if you say this trifluoroacetic acid is considered to be strong acid because it is less than 1, and these two acids, which is benzoic and the acidic, it is moderately strong acids. Now next it is saying your carboxylic acids आर वीकर देन मिनरल एसिड. सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर वीकर देन द मिनरल एसिड्स एंड दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स एंड मैनी सिंपल फिनोल्स, राइट. बट अगर अब इनकी एसिडिटी कंपेयर करें अल्कोहल्स और फिनोल से तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं ये. इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स अमंग द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. सब मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. यू ऑलरेडी नो वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. वी नो दैट फिनोल्स आर एसिडिक एज कम्पेयर टू द अल्कोहल बिकॉज after releasing the H ion your phenoxide ions get stabilized, resonance stabilized. But the higher acidity of carboxylic acids as compared to the phenol can be understood similarly. So if you compare the acidity of benzoic acid and the phenol or simply any carboxylic acid with the phenol, you will get that carboxylic acid is higher in acidity as compared to the phenol. The conjugate base of carboxylic acid, a carboxylic ion, is stabilized by two equivalent resonance structures in which the negative charge is at the more electronegative oxygen atom. It is saying, see, if you draw the resonating structures of carboxylate ion, you can see this will be the resonance like this. तो यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपके रेजोनेटिंग, तो वो आपके कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे. यू कैन सी हेयर द स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, फाइन. दो ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट है और नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन के ऊपर है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फाइन. एंड नेक्स्ट इट इज सेइंग द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल. अगर आप फिनॉक्साइड की बात करें जो कि कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का, इस केस में जैसे ही आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये चला जाता है कार्बन के ऊपर. डबल बॉन्ड ओ, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ देयर. तो यहाँ पे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेसिकली दे आर नॉट इक्विवेलेंट. एंड सेकंड थिंग इज दैट द कार्बन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन. सो दिस इज डिस्टेबलाइजिंग द रेजोनेंस here, fine. So the basically the conjugate base of phenoxide ion has non-equivalent resonance structures in which the negative charge is at the less electronegative carbon atom. Therefore resonance in phenoxide ion is not as important as it is in carboxylate ion. So resonance जो है phenoxide में इतनी important role नहीं play कर रही है जितना carboxylate में कर रही है. So negative charges because delocalized over two electronegative oxygen atoms in carboxylate ion, whereas it is less effectively delocalized over one oxygen atom and less electronegative carbon atom in phenoxide ion. सो फिनॉक्साइड आयन के केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे डिलोकलाइज्ड है और कार्बोक्सिलेट आयन के केस में जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ किस पे डिलोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर. थस द कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड दैन फिनॉक्साइड आयन. सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन फिनोल्स. Now next is the effect of substituents on the basically acidity of carboxylic acid. So substituents का भी बहुत इफेक्ट है carboxylic acid की acidity पे. So there are two group, one is electron withdrawing, other is electron donating. So if group is electron withdrawing, it will withdraw the electron density toward itself. So your carbon oxygen bonds will become more polar and oxygen hydrogen bond will become more polar. So where the polarity of which bond increases, so there will be more acidic character, fine. And similarly in case of electron donating group, they release the electron toward the carbonyl group, and what they are doing, they are basically decreasing the polar nature of carbon oxygen or the hydrogen bond. So simply your oxygen hydrogen bond is becoming less polar in the case of electron donating group. That is why the EDJ group or the electron donating group will decrease the acidic character of the carboxylic acid, fine. So you can see here it is written that electron withdrawing group stabilizes the carboxylate anion and strengthens the acid. Electron donating group destabilizes the carboxylate anion and weakens the acid. नाउ इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप्स इन दिस ऑर्डर. अभी सबसे ज़्यादा ग्रुप का इफेक्ट दिखा रहा है कि CF3 सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो करता है. इट इज़ मोर एसिडिक करेक्टर शो करेगा. देन NO2, देन साइनाइड, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन दी pH ग्रुप, फाइन. तो ये सब इनकी एसिडिटी के ऊपर बेस्ड चीज़ लिखी है. तो आप pK वैल्यूज़ के बेसिस पे देख सकते हैं कि दिस इज़ योर स्ट्रॉन्गर एसिड. आफ्टर दैट CCl3COH, देन CHCl2, देन NO2CH2, आफ्टर दैट CH2COH. So all these acids are arranged on the basis of their increasing order of pK values. And next again similarly your next series is given to you FCH2OH, then ClCH2, then BrCH2, then HCOH, then ClCH2CH2. Now carbon chain has increased. After that your benzoic acid, then benzyl. Your benzyl group is there over the carboxylic group with the acid group. There is a benzyl group, then acetic acid, then your propanoic acid, fine. So
direct attachment of groups such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases the acidity of corresponding carboxylic acid, contrary to decrease expected due to resonant effect shown below. तो अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किसी विनाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप से अटैच है तो वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के, जबकि एक्सपेक्टेड ये है कि रेजोनेंस की वजह से डिक्रीज़ करना चाहिए, बट एक्चुअल में इट इज़ इंक्रीजिंग. फाइन. सो दिस इज़ बिकॉज, अब ऐसा क्यों है कि आपका विनाइल या फिनाइल ग्रुप जो अटैच है वो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज their carbons are basically sp2 hybridized and they are having the greater electronegativity. So due to greater electronegativity of sp2 hybridized carbon to which carboxylic carbon is attached, the presence of electron withdrawing group on the phenyl of aromatic so it is saying कि दिस इज़ द सेकेंड टर्म जो बाद में बताऊंगी मैं. इट इज़ सेइंग कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज़ अटैच टू दिस कार्बोनिल कार्बन इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ sp2 hybridized. So this sp2 hybridized carbon is basically more electronegative as compared to the sp3, so it will withdraw the electron density toward itself and will make this acid, will basically increase the acidic character of this acid. Similarly the phenyl group also. Now it is saying कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका फिनाइल पे लगा है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज देयर एसिडिटी. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि दिस इज़ द बेंजोइक एसिड. हेयर पीके वैल्यू इज़ 4.19. जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा NO2, इट्स पीके हैज़ डिक्रीज 3.41, सो इट हैज़ बिकम गुड एसिड और इट हैज़ बिकम द स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू द बेंजोइक एसिड. Fine. Now if you see this group, that is benzoic acid over OCH3, this is electron donating in nature, so it is decreasing the acidic character and increasing the pK value and making the benzoic acid less acidic. So this is the chemical property of carboxylic acids here. In the next video I will discuss the further reactions of benzoic acids or carboxylic acid.